गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर सेक्टर रिफॉर्म। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो दो क्रूशियल अमेंडमेंट्स जो हैं वो करेंगे कंट्री के एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को ओपन करने के लिए अपकमिंग मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। तो एटॉमिक एनर्जी जनरेशन को प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स के लिए खोलने के लिए अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो पहली अमेंडमेंट तो होगी सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के अंडर, जिसमें अभी जो है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो है वो इक्विपमेंट वेंडर्स के ऊपर लाइबिलिटी उसकी आती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो अब इस अमेंडमेंट के थ्रू लाइबिलिटी जो वेंडर्स की होगी उसके ऊपर एक कैप लगा दिया जाएगा, मतलब कितना होगा, मैक्सिमम जितनी उनकी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर टाइम बाउंड लाइबिलिटी विंडो होगी, मतलब अगर तब तक कोई न्यूक्लियर प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, उसके बाद वेंडर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और इससे जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को रीअश्योरेंस मिलेगी और उनके लॉन्ग टर्म लीगल और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इंडिया में कम हो जाएंगे। दूसरी अमेंडमेंट होगी जो कि प्राइवेट इंडियन कंपनीज़ को और शायद फॉरेन फर्म्स को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को एज जनरेटर्स भी ऑपरेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है न्यूक्लियर एनर्जी में जो है वो इनेबल हो पाएंगी और जो है ओपन होंगे डोर्स फॉर माइनॉरिटी इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑल्सो। ठीक है। तो मार्च 2025 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने रेगुलेटरी क्लियरेंस दिया हॉलटेक इंटरनेशनल को कि वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी जो है अपने इंडियन पार्टनर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और एल को ट्रांसफ़र कर सकें। इससे जो है को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की इंडिया में हो सकेगी। ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स पार्ट हैं ब्रॉडर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आउटरीच विद द यूएस का, और ये इंडो यूएस ट्रेड पैक्ट को भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इससे क्लीन एनर्जी कॉपरेशन होगा, स्ट्रेटजिक ट्रस्ट बढ़ेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट हब भी बनेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, खासकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का फ्यूचर में। तो जो प्लान है ओपन करने का न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स के लिए, वो एक पिवटल मोमेंट होगा इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन में, क्योंकि हम नेट ज़ीरो एमिशंस चाहते हैं 2070 तक। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी एडिशन भी होगा हमारा बहुत तेज़ी से। फिर क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हम डाइवर्सिफाई करेंगे और इनोवेशन भी प्रमोट होगी। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में है वो इसको लेकर खासकर जो है वो अपोज कर सकती हैं इसको। इसका जो लेजिस्लेटिव पाथ है वो भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, खासकर लाइबिलिटी लॉ को अमेंड करना, रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करना और सेफ्टी मैकेनिज्म्स को इंश्योर करना भी जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को जब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चाइना स्टेप्स इन इंडिया बांग्लादेश टाइज। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश जो है वो यूनाइटेड नेशंस की लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कैटेगरी से जो है वो निकलने वाला है नवंबर 2026 में। तो इससे जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस जो एक्सपोर्ट मार्केट्स को मिलता था उसे अदरवाइज़ यूरोपियन यूनियन को, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए बांग्लादेश जो है वो इकोनॉमिकली चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेंशन्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में राइज होते ही जा रहे हैं। आपको पता है इंडिया ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं बांग्लादेशी गुड्स के ऊपर, खासकर रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश टॉप एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है रेडीमेड गारमेंट्स का। अप्रैल में इंडिया ने 5 ईयर ओल्ड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो कि बांग्लादेश को अलाउ करती थी कि वो अपने गुड्स वेस्टर्न मार्केट्स में भेज सके इंडियन और लैंड राउट्स और एयरपोर्ट्स के थ्रू, वो भी ख़त्म कर दी है। इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो रेसिप्रोकल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो बांग्लादेश ने इंडिया पे लगाए हैं उसी के ही हम रिटर्न में ये कर रहे हैं। तो बांग्लादेश का जो चीफ एडवाइज़र हैं वो पुश कर रहे हैं ग्रेटर चाइनीज़ इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, और वो ये चाइना की स्ट्रेटजी टू कर्ब इंडियाज़ रीजनल इन्फ्लुएंस के साथ मैच होता है। अब इसका स्ट्रेटजिक कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया जो है वो रिफ्यूज़ करा है उसने चाइना लेड आरसीईपी को ज्वाइन करने से, और रादर हम तो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के साथ ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे यूएस, यूके, ईयू के साथ हमने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को प्लान किया हुआ है। न्यू दिल्ली जो है उसने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं गारमेंट इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश पर। इंडिया अपनी जो है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर प्रमोट करना चाहता है। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बेनिफिट करेगा रीसेट एफटीएस से। जैसे कि हमने देखा कि अभी इंडिया के जो गारमेंट्स हैं उनको टोटल
ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूके में। सिमिलर एक्सेस हम यूएस और ईयू के साथ भी चाह रहे हैं। तो इंडियन टेक्सटाइल फर्म्स जो है उन्होंने कंसर्न्स रेज़ किए हैं कि बांग्लादेश को प्राइस एडवांटेज होते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको हाई कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि 5% जीएसटी लगता है उनको लोकली सोर्स्ड फैब्रिक पर, जबकि बांग्लादेश जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स इंजॉय करते हैं बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स या मैन्युफैक्चरर्स। बांग्लादेश ने भी इंडियन यार्न एक्सपोर्ट जो उनके लैंड पोर्ट्स के थ्रू होते हैं उसके ऊपर भी जो है वो रोक लगा दी है अपनी खुद की टेक्सटाइल मिल की डिमांड्स के मद्देनज़र। जून 2020 से हमने देखा है कि चाइना ने 97% जो बांग्लादेशी गुड्स हैं उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया है अपनी डोमेस्टिक मार्केट में, और वो बांग्लादेश को अपने इंडस्ट्रियल बेस और एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने में भी हेल्प कर रहा है। बांग्लादेश होस्ट करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइनीज़ बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स साउथ एशिया में, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल बायर है चाइनीज़ मिलिट्री हार्डवेयर का भी। तो चाइना की इन्वॉल्वमेंट जो सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हैं जैसे तीस्ता रिवर डेवलपमेंट में और स्ट्रेटजिक प्रेजेंस जो है उनकी बांग्लादेश में, ये डायरेक्टली चैलेंज कर रही है इंडिया के रीजनल इन्फ्लुएंस को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रेफर किए हैं 14 क्वेश्चंस टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होता है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट के ऊपर। ये इनेबल करता है एग्जीक्यूटिव को कि वो जुडिशियल क्लैरिटी ले सके कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर बिना किसी लिटिगेशन को इनिशिएट किए। तो आर्टिकल 143 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जो है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ओपिनियन के लिए जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे ही क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स का है वो उस पर क्लैरिफिकेशन मांगी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, ओके। और जो ये प्रोविज़न है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ओरिजिनेट हो रहा है, ओके। तो प्रेसिडेंट जो है वो रेफ़र करते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और एज़ पर आर्टिकल जो एज़ पर आर्टिकल 145 मिनिमम 5 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इस मैटर को हेयर करते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि क्या वो इस रेफरेंस को लेना चाहते हैं या इसके ऊपर जो है वो अपना ओपिनियन देना चाहते हैं कि नहीं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने लॉन्च किया है रिसेंटली PSLV 6C61 मिशन श्रीहरिकोटा से EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए, लेकिन ये मिशन फेल हो गया बिकॉज थर्ड स्टेज इशू एक आया। तो PSLV क्या एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है डेवलप किया गया जिसको इसरो द्वारा सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में प्लेस करने के लिए, और इसको पावर किया गया है एक डिफरेंट इंजन और प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन द्वारा हर स्टेज को। तो 4 स्टेज है। तो पहली स्टेज जो है उसमें जो है 4.8 मेगा न्यूटन्स तक की जो है वो थ्रस्ट जनरेट हो पाती है, सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज जो है वो विकास इंजन द्वारा लिक्विड फ्यूल कॉम्बिनेशन की स्टेज है। थर्ड स्टेज जो है वो सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज है ऑफ कोर्स, और जो लास्ट फोर्थ स्टेज है उसमें 2 लिक्विड इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोर्चुगल। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोर्चुगल जो है वो अनदर माइनॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ मूव कर रहा है रिसेंट जनरल इलेक्शंस के बाद। वेस्टर्न मोस्ट कंट्री है मेनलैंड यूरोप की, ओनली लैंड बॉर्डर इसका स्पेन के साथ है, बाकी के इसके सारे बॉर्डर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ हैं। यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ। लिस्बन यहाँ की कैपिटल है। मैरीटाइम टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ पर। टैगस रिवर यहाँ पर फ्लो करती है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 58 ज्ञानपीठ अवार्ड संस्कृत स्कॉलर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को दिया है अभी रिसेंटली। तो ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है इंडिया का, हर साल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स इंडियन लिटरेचर, क्रिएटिव राइटिंग या किसी भी इंडियन लैंग्वेज जो कि शेड्यूल 8 की है या फिर इंग्लिश में भी दिया जा सकता है। 1961 से दिया जा रहा है अवार्ड, और इसको कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ जो है वो स्पॉन्सर करता है। पहले रेसिपिएंट थे मलयालम पोएट जी शंकर करूप जी, और सिर्फ उन्हीं क्रिएटिव राइटर्स को जो दिया जाता है जो भी जिंदा हैं और जो इंडियन सिटीजन्स हैं, और
जो है, जो लैंग्वेज जिसको एक बार पर्टिकुलर अवार्ड मिल गया एक पर्टिकुलर ईयर में, अगले 2 साल तक उसी लैंग्वेज में फिर अवार्ड वो नहीं मिलता है। एक राइटर जिसको अवार्ड एक बार मिल गया उसको दोबारा कंसिडर नहीं किया जाता है। अवार्ड अगर एक पर्टिकुलर में ईयर में अगर ज्ञानपीठ अवार्ड सिलेक्शन बोर्ड को लगता है कि कोई भी सूटेबल नेम नहीं है, तो उस दिन उस साल अवार्ड दिया ही नहीं जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं RS-24 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की मिलिट्री एजेंसी ने कहा है कि रशिया ने प्लान किया था कि वो ट्रेनिंग और कॉम्बैट लॉन्च करेंगे RS-24 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यार्स कॉम्प्लेक्स से। यार्स जो है एक रशियन मेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो एंटर हुआ सर्विस में फरवरी 2010 में। 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मीड केपेबल है। मिनिमम इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है और मैक्सिमम 10,500 किलोमीटर की रेंज है। ये आर्म्ड है 10 मीव से, और हर मीव जो है वो थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल है, जो कि 300 किलोटन तक का हो सकता है। और इसकी कैपेबिलिटी है ये फ्लाइट के टाइम पर भी मैन्यूवर कर सकता है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is India's nuclear power sector reform. This topic is important for your economy section. Union government is likely to move two crucial amendments in the laws governing the country's atomic energy sector in the upcoming monsoon session of parliament. And this will open up atomic energy generation to private and foreign players of India and foreign players in India. So the first proposed amendment pertains to the civil Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010, and currently the law channels the liability for nuclear accidents to equipment vendors, which has deterred major global players from investing in India. The amendment seeks to cap the liability of vendors to the original value of the contract, and it also aims to introduce a time bound liability window beyond which the vendors will not be held responsible. This is expected to reassure foreign investors by mitigating their long term legal and financial risks. The second amendment pertains to how the second amendment would allow private Indian companies, through, of course, the Atomic Energy Act 1962, and even perhaps the foreign firms, to operate nuclear power plants as generators, which is currently reserved for only state-owned entities like NPCIL and NTPC. So this will enable public-private partnerships in nuclear energy. It will also open doors for minority equity participation by foreign firms in upcoming nuclear projects. In March 2025, US Department of Energy gave regulatory clearance to Holtec International to allow the company to transfer small modular reactor technology to its Indian partners, including Tata Consulting Engineers and Larsen and Toubro. This clearance will now enable co-production and technology transfer for small modular reactors in India. And these reforms are part of the broader trade and investment outreach with the US, which would contribute to the Indo-US Trade Pact. So this would expand clean energy cooperation with them, strengthen our strategic trust between the two nations, and position India as a future export hub for nuclear technology, particularly small modular reactors. So, opening up of the nuclear sector to private and foreign players could be a pivotal moment for India's energy transition, because because we have an aim to achieve net zero emissions by 2070, and this would accelerate nuclear capacity additions. It would also diversify our clean energy sources. It would also promote innovation through global technology partnerships. Okay, so despite the potential, there are still challenges, like there could be political opposition and public safety concerns. The legislative path would not be smooth. It would be arduous, because we want to have the liability law amended, which is a controversial topic, and we have to ensure that regulatory compliance and safety mechanisms are intact while involving the private players. So the next topic is China steps in India-Bangladesh ties. This topic is important for your economy and international relations. So Bangladesh is set to graduate from the United Nations least developed country category in November 2026. And this will end duty-free access to export markets like the European Union. To offset the impact, Bangladesh is shifting economically towards China, and this could strain its trade relations with India.
Political and economic tensions between India and Bangladesh are rising. India has imposed import restrictions on Bangladeshi goods, especially the ready-made garments. So Bangladesh stop export and foreign because Bangladesh is a top exporter and foreign exchange earner from them. Earlier in April, India ended a 5-year-old transshipment facility which allowed Bangladesh to export goods to Western markets via Indian land routes and airports. Indian officials have cited reciprocal trade restrictions by Bangladesh and congestion at Indian ports as reasons for these decisions. Bangladesh's chief advisor has pushed for greater Chinese economic presence near India's northeast, and this also aligns with China's strategy to curb India's regional influence. India has refused to join the China led RCP, and rather we are integrating our economy with Western economies through FTAs with US, UK, EU, EFTA. Okay, government of India has imposed restrictions on garment imports from Bangladesh, and this is basically aligned with India's strategy to promote labor intensive sectors under new free trade agreements. India's textile sector is expected to benefit from these recent FTAs, and Indian garments now enjoy duty free access to UK, and similar access is being pursued with the EU and US as well. Indian textile firms have raised concerns over Bangladesh's price advantage because, as per a GTRI report, Indian manufacturers face higher costs due to a 5% GST on locally sourced fabric, while Bangladesh enjoys import and export incentives. Bangladesh has restricted Indian yarn exports via land ports, allowing them only through seaports. This is, of course, being done uh, to cater to the domestic textile mill demands. Since June 2020, what is happening is that China has granted 97% of Bangladesh goods duty free access to its domestic market. And it is also helping Bangladesh upgrade its industrial base and diversify exports. Bangladesh also hosts the highest number of Chinese backed infrastructure projects in South Asia. It is also the second largest global buyer of Chinese military hardware. And China's involvement in sensitive projects like the Tista River development signals a strategic presence in Bangladesh. And this could directly challenge India's regional influence. So the next topic is presidential reference. This topic is important for your polity section. So President of India has recently referred 14 questions to the Supreme Court under Article 143. So a presidential reference is a constitutional mechanism under Article 143 of the Indian Constitution, wherein the President of India seeks the advisory opinion of the Supreme Court on important questions of law or fact, and this enables the executive to seek judicial clarity on complex constitutional matters without initiating litigation. So under the clause 1, the President can refer any question of law or fact of public importance to the Supreme Court for its advisory opinion. Under the Clause 2, the disputes involving pre-constitutional treaties and agreements permits the President to refer to such matters for legal clarification. Supreme Court's opinion is not binding on the President, and the provision originates from the Government of India Act 1935, which empowered the Governor General to refer legal matters to the Federal Court. The President refers to the advice of the Union Council of Ministers, and as per Article 145, minimum 5-judge bench of the Supreme Court must hear the matter. Supreme Court may choose whether or not to answer the reference if it can refuse to respond if the question is vague, hypothetical, or outside the judicial purview. So the next topic is Polar Satellite Launch Vehicle. This topic is important for your science and tech section. ISRO has launched the PSLV C61 mission from Sriharikota to place EOS-9 satellite, that is Earth Observation 9 satellite, into a sun-synchronous polar orbit. The mission failed due to a third stage issue. So PSLV stands for Polar Satellite Launch Vehicle, and it's a 4-stage launch vehicle developed by the ISRO, and it is primarily designed to place satellites into sun-synchronous polar orbits. Each stage of PSLV is powered by a different engine and propellant combination, enabling it to carry medium weight payloads to a variety of orbits with high precision. PSLV has 4 stages with alternate solid and liquid propulsion systems. The first stage is capable of generating a peak thrust of 4.8 meganewtons. Of course, it's a solid propellant based stage. The second stage is powered by Vikas engine, which uses a liquid fuel combination. The third stage reverts to the solid propulsion, again using the HTBB based fuel. The fourth stage is the 2 liquid engine stage. Okay.
So the next topic is Portugal. This topic is important for your international relations. So Portugal is moving towards another minority government following its recent general election, reflecting growing public discontent with traditional political parties. So Portugal is the westernmost country of mainland Europe, located on the western coast of Iberian Peninsula. It shares its only land border with Spain to the north and east, and is bounded by the North Atlantic Ocean to the south and west. It is a unitary semi-presidential republic with a parliamentary democracy. Lisbon is the capital of Portugal, and it has a maritime temperate climate, cool and rainy in the north and warmer and drier in the south. The Tagus River flows through the country. So the next topic is Gyanpith Award. This topic is important for your art and culture section. President of India has conferred the 58th Gyanpith Award on Sanskrit scholar Jagatguru Rambhadracharya ji, and this is the highest literary honor of India. It is given every year to an author for his or her outstanding contribution towards Indian literature through creative writing in any of the Indian languages mentioned in Schedule 8 of the Constitution and even English. It was instituted in 1961. It is sponsored by the cultural organization called Bharatiya Gyanpith. The first recipient of the award was Malayalam poet G. Shankar Kuru, and only those creative writers who are alive and are Indian citizens can be proposed for the award. A language which receives the award in a particular year is not eligible for consideration for the next 2 years. A writer who receives the award once will not be considered again. An award may not be given in a particular year if the Gyanpith Award Selection Board feels that there is no suitable name which comes up to the expected standard of the award. So the next topic is RS-24 Intercontinental Ballistic Missile. This topic is important for your security section. So Ukraine's military agency has said that Russia had planned to conduct a training and combat launch of the RS-24 Intercontinental Ballistic Missile from Yars complex to intimidate Ukraine and the West. So this RS-24 is a Russian-made intercontinental ballistic missile system which entered into service in February 2010. It's a 3-stage solid propellant MERV-capable ICBM, and it is expected to have a minimum range of 2,000 kilometers and a maximum range of 10,500 kilometers. It is armed with up to 10 MERVs, each containing a thermonuclear warhead weighing 300 kilotons. It has the capability to maneuver during flight, which gives it an advantage against modern missile defense systems. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.